Terms like migration and displacement should not be merely reduced to a journey or translocation across borders. Rather, it is a feeling of being apart from one's origins, roots, home, wherein the reasons may vary but shall definitely include necessity, ambition, amongst others. Every individual who has migrated or has decided to comes with a baggage full of longing, resilience, and a hope of constructing a safe space far from home. आप लोग क्या कब से रह रहे हो यहाँ? 2 साल हो गया मेरा। 2 साल हो गया। मतलब यहाँ फैमिली रहता है या खुद ही अपना? नहीं, बड़े भाई रहता है ये सब। मैं इसका 15 साल हुए यहाँ पे। मेरे 15 साल हो गए? हाँ, मेरा सेम जमुई जिला से ही है? हाँ, मेरा बड़े भाई है। ओह, मेरे को आते हुए यहाँ 2 साल हुआ। 2 साल हो गए। कहाँ पे रहते हो आप लोग इधर? यहाँ पे 4 महीने के बाजू में। तो ऐसा नहीं लगता है कि घर थोड़ा दूर दूर सा हो गया है? बिल्कुल ऐसा, मतलब जाने वाने में टाइम लगता है, जाते हो तो पता रहता है कि वापस जाना पड़ेगा, घर पे रुकना नहीं है। और क्या है कि अभी मेरे सबको 1 साल 2 साल में जाता हूँ गाँव। 1 साल 2 साल में जाते हो वही ना? हाँ, तो वो टाइम पे फील होता है ना थोड़ा कि घर जो है थोड़ा चला गया तुमने। आपको क्या हैदराबाद में घर वाला फील आता है थोड़ा? किराया तो नहीं, घर वाला फील मतलब ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा कि हाँ हैदराबाद शहर जो है घर बन सकता है आपका? ऐसा लगता है ऐसा? लगता है। और अभी तक का लाइफ कैसा रहा? सही रहा? सही रहा। गाँव के हिसाब में, गाँव के हिसाब से तो हाँ, गाँव के हिसाब से इधर भी लगता है मेरे को। गाँव के जैसा लगते हैं ना? हाँ, इधर होगा दोस्त पूरे होगा, इधर भी दोस्त इधर। मतलब अगर मान लो आपको दोस्त मिल रहा है तो आपको दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं रहता तो फिर थोड़ा शायद लगता है कि अरे भाई, मतलब गाँव में तो अलग मजा रहता है, वो ऐसा थोड़ी मिलता है यहाँ पे। Modernization, accompanied by a wave of global connectivity, gave birth to certain metropolises, cities that eventually became hotspots for development. For instance, Bombay emerged as the very first city of dreams. Similarly, there were new places to come under the same category. Hyderabad, where this particular project is based spatially, embraces this title and in recent years has been in the limelight insofar as the IT and corporate culture is concerned. All these instances have led to a huge influx of people in the city. But the question remains, has the city accepted these people and vice versa? Are these people happy while attempting to carve out a new home for themselves? As the popular saying goes, a house is not a home. The idea or objective that is under observation here is the feeling called home. Rather than being a place of residence, it becomes a site where one feels accepted and is at peace. In the streets of Paramount Colony, a part of Tolichowki neighborhood, one can see a significant number of African migrants, most of them hailing from Sudan, Somalia, and Kenya. The colony bears a tag of Mini Somalia due to this population that inhabits the space. Mohammed, a paramedical intern, tells of the story behind this community settlement here, stating that there are mostly those who are unable or deprived of good medical facilities back in their native place, thus coming down here to get their treatments done. He himself had been here for the past couple of years, not going home all this while. While having the conversation, he said that even though there are many familiar faces here that he is surrounded with, the family that he has left behind at home would not let him stay back here. Therefore, he says that Hyderabad is not for him to make a new home for himself. He rather would love to get done with his training and head back to his native land.
However, in the same neighborhood, there is a certain Tafosha cafe which specializes in the authentic Arabic and African cuisine. Manager there, Mr. Amir, hails from Iran, though he himself says that apart from the fact that his mother stays back there, he does not feel any attachment as such to his native land. He says, I think Hyderabad is my home. I have my family here. My kids are growing up here. I have a settled business going on. Touch wood. What more do I need to call a place home? To him, home means a place that provides in terms of comfort, convenience, and opportunities. सही कि कितना टाइम हो गया आपको इधर? हम लोग का हो गया 2 साल। आप लोग ऐसा और भी लोग हैं आपके उसका क्या है ना, आदमी है और लोग भी हैं उधर भी हमको एक मिला बंदा 13 साल से रहता है इधर, नारियल बेचता है और इधर फलकनुमा में होते तो हर बार जाते हैं ऐसे मतलब टाइम मिलता मौका मिलता जाते हैं ना। त्योहार व्योहार पे कभी गया लास्ट टाइम कभी गया याद नहीं है। नारियल 40 का है, 40 रुपीज। इधर क्या ऐसा फैमिली के साथ रहते हैं नहीं, 40 रुपीज। हैदराबाद में घर वाला फील आता है घर वाला फील आता है घर वाला यार उधर 2-3 महीने कई महीना होता है, 5-6 महीना, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, यही चक्कर है। आना जाना रुकेगा चलते रहेगा 2 महीना 3 महीना किए घर पे जाना ही पड़ेगा। The common thread, despite everything that culminates all these voices and stories, is this element of hope, of whether or not the city is or can be a home to them. तो कितना ऐसे टाइम कितना हो गया आप लोग को इधर इधर हो गया 2 से अभी तो 2 साल हो गया। हाँ। पहले उधर काम चल रहा था, अभी इधर चल रहा है। अच्छा अभी 2 साल कुल मिला के हो गया घर जाने में तो थोड़ा वो लगता होगा मतलब टाइम घर जाने का नहीं, मौका 2-3 महीने के बाद जाते रहते हैं, आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं, जाते भी रहते हैं। क्योंकि आपको घर का मतलब क्या समझ में आता है तो क्या नहीं, हैदराबाद घर नहीं है, लेकिन काम चलता है इसका जगह जगह। जैसे बेंगलोर में भी चालू हो रहा है, अच्छा वहाँ भी आप अमृतसर भी चालू हो गया है। ओह। इधर का हो जाएगा, अमृतसर निकल जाएंगे। वहाँ अमृतसर निकल जाएंगे घर मतलब आपके लिए घर कभी हैदराबाद है कभी अमृतसर हाँ, है कभी यही है और ऐसा क्या मान लीजिए जैसे वो बोलते हैं ना अपना वाला थोड़ा कि अपना जगह लगता है थोड़ा सा भी अपना और रहते रहते लगने लग जाता है, मतलब कि उतना ज़्यादा बेकार भी नहीं लगता है। रहते रहते सब हो जाता है। रहते कैसे हैं आप लोग रूम वूम बना के देता है वो कंपनी जो सब। टेम्पररी वाला वो जो था रूम वूम सब, लाइट वाइट, पानी का भी व्यवस्था सब कंपनी देता है और कोई दिक्कत ही नहीं होता हमारे को। आपके पहचान का कोई ऐसे यहाँ पे है जैसे आप एमपी से हैं एमपी का कोई हाँ, वो देखो मिस्त्री सामने एमपी का ही काम कर रहा है, उधर लेडीज भी है। लेडीज हाँ, वो भी सामने बैठा है, वो भी एमपी का ही है। तो एक तो ये होता होगा ना कि मान लीजिए कोई एमपी वाला है तो लगता होगा कि अरे थोड़ा अपना जैसे हाँ, हम तो अपने रहते हाँ, हैं ना, इसलिए अपना भाषा वाषा जब हाँ। सुनते हैं हिंदी कोई बोलता है तो हमको लगता है अरे कोई तो है इसीलिए मन लगा रहता है। जैसे अपने अपने बंदे घूमते रहते हैं। लोग चाहिए होता है मन लगाने के लिए लोग नहीं होता तो फिर थोड़ा हाँ, कैसा लगता है थोड़ा अगर जब मान लोग नहीं लीजिए रहता अजीब सा लगता है ना, फिर काम में अपना हाँ, फिर मन नहीं लगता, फिर जाना पड़ता है। जैसे अभी समझ काफ़ी हैं, एमपी के हैं, मेरे साथ वाले 20-25 लोग हैं इधर। बिहार के हैं जैसे वो भी 20-25 है। बंगाल तरफ का भी है, कुछ बंगाल का भी है। पलस्तर वाला पूरा बंगाल का है, सेटिंग सरिया वाला नेपाल। Me, home is basically a culmination of 3 things, that is food, language and people. And I think if I have to pick one, the 3 out of the 3, I would pick food. The smell of mustard oil, the smell of garlic, a fresh cool drink of sattu. I am very Bihari. I love my chuda bhuja, I love my muri. I am very Bihari in that sense. So I think food is the closest. It helps me recreate home on a plate, basically. Amidst the hustle and chaos of the city, when you seek out for them, you'd get to hear this number of voices emerging.
These voices have got the people behind them, and the way they become stories in themselves. We shouldn't mistake them as merely a tale that vanishes in the crowd of the city. They have their own place, own identity, and they are carving their abode too. The idea of that can come in different forms, as we heard. To some, home has become a holiday destination, some place that they cannot think of staying permanently. Their loop-like to and fro journey is a definition of home now. Some of them, more surrounded by the city lights, see home as a feeling. To get to that feeling, they have created anchors in the form of people, places, food, activities. All of them eventually come to accept with what ease that they are getting out of the city, how much and in what ways they are able to create a home away from home.